Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 3 from part 1, that is called as enzymes. In this whole chapter, we are going to discuss about the nature of enzymes, their structure, all those terminologies which are related with the functioning of enzymes, as well as their importance in our life, in our regular activities. Let us enlist the contents first of all, which we'll discuss in detail. Number 1, we're going to introduce the term enzyme as well as their working, then the structure of enzymes composition chemically, cofactor, that is very important for the proper functioning of enzymes types regarding their completion or not, the location where they are performing their functions, characteristic features. Characteristics would include all the above mentioned topics in a categoric way in it. Mechanism of enzyme action, how enzymes work. Models to show mechanisms, that there are different scientists who have participated in order to show how enzymes properly work in our living systems. Then there are some factors which are affecting enzymes action. And at last, we'll discuss about inhibitors which are responsible to inhibit the activity and the mechanism of enzyme action. Let us start from the first lesson, that is including about introduction, some terms related to enzymes, structure and composition of enzymes, types of enzymes, and their location within cells. This is the whole lesson. We'll discuss about these topics. What are the requirements for enzyme to work, how the things they are known as which are related to it, what is substrate, what are products, what is enzyme substrate complex, and so on. Introduction. Enzymes. It is a word which is made up of two things together. Enzymes. En mean in. Zymes. Yeast. So it's a combination of two things together. इन yeast. इसका मतलब ये है कि एंजाइम्स को पहली बार जब डिस्कवर किया गया तो पर्टिकुलर चीज जो जिसके अंदर एंजाइम्स को काम करते देखा गया, that was yeast. And what is a yeast? It is a fungus, exceptional fungus, non-hypho, unicellular, and very important economically and commercially for us. उसमें पहली बार एंजाइम्स की वर्किंग को देखा गया था, इसलिए ये नाम उसको दिया गया, enzymes, that mean in yeast. Let us introduce it. It is the most important group of globular proteins that are biologically active. किसी भी चीज को समझने के लिए हमें कुछ की पॉइंट्स की जरूरत होती है. इंट्रोडक्शन में हमारे पास दो की पॉइंट्स हैं. Very important globular proteins that are biologically active. These two things, they're very important to introduce this very term. Globular proteins. Enzymes are known as globular proteins. Why? Because there are two types of structural proteins. Number 1, fibrous proteins, which are fibers or thread-like structure. And the second one is that which we are discussing this time, called globular proteins. As their name indicate, they are exhibiting themselves as a globe or a circle-like structure. They are quaternary structures of protein. That means they are at the peak level of organization. Biological molecules में ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं. Quaternary structure है जो कि तीनों levels से cross करने के बाद बनता है, और in order to minimize the length of the protein molecules together, उसको coil and recoil करके एक formation दे दी जाती है in order to make a globular protein. So enzymes globular protein की एक type है जो biologically active हैं. That means they are very active in life. They are very necessary in order to continue. They're very necessary in order to continue life processes and chemical reactions. So these are those proteins which are biologically active, without which it is not possible for us to continue our chemical reactions. That's why the second point we'll introduce, they tremendously increase the efficiency of biochemical reactions. इनके होने से हमारे अंदर चलने वाला हर रिएक्शन बहुत ही तेज स्पीड अप हो जाता है. इसीलिए टर्मिनोलॉजी यूज हुई बायोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल द केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन विद इन लाइफ.
within our bodies, within our systems, within cells. अगर एंजाइम्स ना हो तो शायद वो बहुत ही स्लो होते या फिर कंप्लीट ही ना होते, लेकिन हम एक वक्त में ढेर सारे काम इकट्ठे इसलिए कर पाते हैं कि हमारे अंदर एंजाइम्स वर्किंग है, एंड दैट इज द रीजन दे आर नोन एज बायोकैटलिस्ट्स. They are performing catalysis in living cells, living bodies. That's why they are known as biocatalysts. They are specific for each reaction. It is not possible for any enzyme to perform the function of any other. बहुत generalized example आपके सामने लिखती हूँ. Let's suppose a reaction is going to be completed in these three steps. A is going to be converted into B and B then into C. The first reaction is aided by the help of enzyme 1 and the second one is aided by the help of enzyme 2. So specificity means 1 cannot perform the function of 2 and 2 cannot perform the function of 1. It is not possible for 1 to convert B into C and vice versa. Every enzyme is very specific in choosing its substrate. बहुत सारे एंजाइम्स भी एक ऐसे सबस्ट्रेट के इर्द गिर्द इकट्ठे कर दें जो उसका अपना सबस्ट्रेट नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे. कोई बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू नहीं होगा, कुछ स्पीड अप नहीं होगा और अल्टीमेटली सबकी सब चीजें वहीं रह जाएंगी. इसलिए हर एंजाइम का एक अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जिसे वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है. लेट्स सपोज अगर एंजाइम्स ना होते तो क्या होता? ईदर द रिएक्शन वुड बी टू स्लो और इम्पॉसिबल. या तो रिएक्शन होता ही नहीं, और अगर होता तो इतना स्लो होता कि सारे दिन में हम अपने खुराक का एक छोटा सा पार्ट ही डाइजेस्ट कर रहे होते. क्योंकि जिसने इन रिएक्शंस को स्पीड अप करना है और जिसकी वजह से विद इन नो सेकेंड्स ये कंप्लीट हो जाना है वो वहां पर ना होते, एंड देयर आर एंजाइम्स. एक और बहुत खास क्वालिटी एंजाइम्स की, दे आर रीयूजेबल. Why they are reusable? How they are reusable? Reusable का मतलब है बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं, और बार बार इस्तेमाल सिर्फ वही चीज होती है जो अनटच्ड, अनऑल्टर्ड रह जाए. एंजाइम्स की क्वालिटी ये है, they would never ever being used itself in chemical reactions. इन्हें अपनी केमिकल नेचर इस्तेमाल किए बगैर स्पीड अप करना है. They do not change the products at all. खुद इस्तेमाल नहीं होते, और जब इस्तेमाल नहीं होते तो डेफिनेटली अनऑल्टर्ड वापस आते हैं. अनऑल्टर्ड वापस आते हैं तो फिर से काम के लिए तैयार हो जाते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल इज डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ जो आप इस्तेमाल करते हैं घरों पे. एक स्पूनफुल ऑफ डिटर्जेंट ढेर सारे कपड़े वॉश कर सकता है, साफ कर सकता है. रीजन, एंजाइम्स आर रीयूजेबल. जब एक बार उन्होंने अपना काम कर लिया, वो फिर से अनऑल्टर्ड वापस आ गए और फिर से नए सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड सो ऑन. लिहाजा दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट ऑफ एंजाइम्स.